Hey guys, a very warm welcome to another fantastic episode of the Fisdom Wealthcast. I am excited as always. I know आप कहोगे कि ये तो हर बार excited होता है, but आज की वजह कुछ और है. Today with us we have none other than Mr. Kalpen Parekh, who is the CEO of DSP Investment Managers, popularly known as DSP Mutual Fund. Kalpen is amongst the most renowned leaders in the asset management space, and today, I'm excited and looking forward to learning so much more from him. So, Kalpen, a very warm welcome to the Wisdom Wealthcast. Thank you, Nirav. Looking forward. So, Kalpen, right off the bat, right, I'm really impatient, and there are just so many things. कई सारी चीजें हो रही है मार्केट में, इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में. आए दिन हम पढ़ते जा रहे हैं कि जो रुपी है, जो करेंसी है, उसमें गिरावट आए जा रही है. आरबीआई कुछ कर नहीं पा रहा उसे कंट्रोल करना. दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल हो चुकी है. जब महीने के शुरुआत में वो काफी ऊंचे स्तर पर था, इमीडिएटली कट टू टुडे वो काफी हद तक सॉफ्टन भी हो चुका है. एक महीने पहले हमें डर था कि इन्फ्लेशन कहीं एकदम रन अवे ना हो जाए, हमारे कंट्रोल में ना आ जाए. बट आज फिर हम सोच रहे कि कहीं रिसेशन ना आ जाए, कहीं डिमांड इतना स्लो डाउन ना हो जाए कि पूरा ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में प्लंज करे. देयर इज जस्ट सो मच chaos, just so much noise happening around. To be very honest, beyond a point, the lines just start to blur. It's no longer music, it's no longer noise, it is just chaos. It is very difficult to take anything away. And I can realize that काफी ऐसे इन्वेस्टर्स है जिन्होंने हमें लिखा है और पूछा है, एक सिंपल सा सवाल पूछा है जो कि हर बार पूछते हैं, और हमारे जो इंडियन श्रोता है, ऑडियंस है, उनका फेवरेट सवाल भी होता है, मार्केट क्या बोलता है. सो आई वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑडियंस. आपके हिसाब से, फ्रॉम योर परसेप्शन एंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, मार्केट क्या बोलता है? I'll answer this differently, Nirav. I will not straight away answer the question you've asked. क्योंकि आपने जितने वेरिएबल्स की बात की, करेंसी है या ऑयल है या ग्लोबल रिसेशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, मेरा ये मानना है कि दिन में हमें ऐसे 5 से 10 वेरिएबल हमारे सामने मार्केट फेंकता है. और ये हमारा काम है कि हम इस पे रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का गेम है, ये गेम है लेंथ का, कि कितना लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो. क्योंकि पैसा बनता है लेंथ से. पैसा डेटा को रिएक्ट करने से नहीं बनता है, पैसा लेंथ से बनता है. और अगर दिन में 10 वेरिएबल निकलते हैं तो साल के 365 दिन में 3650 वेरिएबल हमारे ऊपर फेंके जाते हैं. और अगर हम हर वेरिएबल पे सोचे या रिएक्ट करें तो शायद विल गो नोवेयर. वी विल कीप मूविंग इन सर्कल्स एंड सर्कल्स, एंड इवन आफ्टर 10 15 20 years वी विल बी स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस. एंड जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद रहे जब मैं 96 से 98 में NMIMS में आई वाज डूइंग माय MBA. एंड आई रिमेंबर the Reserve Bank governor had come for one of our conference to talk about stability in forex markets. और ये 97 था शायद. 97 में एशियन क्राइसिस हुई थी. और जब गवर्नर स्पीच दे रहे थे अपनी, तब उन्हें किसी ने आके एक चिट्ठी दी और बोला कि रुपी पे काफ़ी बड़ा मूव हुआ है, वॉलेटिलिटी का, डेप्रिसिएशन का, बिकॉज ऑफ दिस एशियन क्राइसिस, बिकॉज हर इमर्जिंग मार्केट की करेंसी में वॉलेटिलिटी हुई है. एंड ही हैड टू अब्रप्टली गो. अब 97 से आज 2022 जो हुआ है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एसेट क्लास है, विच इज़ निफ्टी. ये निफ्टी शायद निफ्टी या सेंसेक्स ले लो, मुझे याद है तब वो शायद 3000 या 4000 के वैल्यू पे था. आज 55,000 के आसपास होगा. तो ये 15 से 20 गुना ऊपर गया है. और इन 22 साल में या इन 25 साल में ऐसे हजारों इवेंट्स आके चले गए हैं. तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये था कि उस दिन अगर, ऑफ कोर्स उस दिन तो मेरे पास पैसा नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए, बट जिनके भी पास पैसा था उस दिन इन्वेस्ट करने के लिए, अगर उन्होंने इस तरह के डेटा पॉइंट्स पे रिएक्ट किया हो तो शायद वो गेम से बाहर निकल जाता है. तो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि हम जब 2030 में या 40 में या 50 में होंगे तो उन दिनों की वरीज भी सिमिलर होगी. लेकिन ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि ये सब पार्ट ऑफ मार्केट है. तो नाउ लेट मी आंसर टू योर क्वेश्चन कि मार्केट क्या लगता है. मेरे हिसाब से मैंने ये एक चीज 6-7 साल पहले एक किताब कोई पढ़ रहा था, उसमें किसी ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था. और ये दो शब्द जो है ना, ये हमेशा याद रखने चाहिए हमें. किसी ने JP मॉर्गन को 1914 में
जब वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़े ऑडियंस के सामने खड़े थे, तो एक सवाल लोगों ने पूछा कि वी वांट टू नो व्हाट इज योर व्यू ऑन द इकोनॉमी एंड ऑन द मार्केट्स, और ये 108 साल पहले की बात है। तो आफ्टर लॉट ऑफ डीप थॉट ही आंसर्ड इन 2 words. He said markets fluctuate, and they seem very simple, or they seem very frivolous at times, but that is the biggest truth of markets. तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता है मार्केट से क्या होने वाला है या क्या लगता है। मुझे ये पता है, अगर आज मेरे पास पैसा है, मुझे अगर सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं डेट फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि 3 साल में इक्विटी एज एन एसेट क्लास 25% टाइम इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। सो 3 साल में एक प्रोबेबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ द वे पास्ट प्रोबेबिलिटीज हैव बीन। अगर मेरे पास 5 साल का पैसा है, तो मैं डेट और इक्विटी के मिक्सचर वाले फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, विच इज हाइब्रिड फंड्स। और अगर मेरे पास 10 साल से लंबे का पैसा है वेल्थ क्रिएशन का, तो वो मैं मार्केट को सोचे बिना इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करता हूँ थ्रू SIPs। तो तो ये एक सवाल का मैंने थोड़ा अलग तरह से आपको जवाब दिया है। बाकी तो जो यूजुअल आंसर है, जो जो आंसर की सबको अपेक्षा होती है कि हर म्यूचुअल फंड वाले जो जवाब देंगे, वो ये है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में ठीक लग रहा है, बिकॉज इंडिया ग्रो करेगा, चाइना से जो शिफ्ट हो रहा है उसका इंडिया बेनिफिशियरी रहेगा, करेंसी थोड़े समय तक वॉलेटाइल रहेगी, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, सो वहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। रिसेशन की बातें चल रही है दुनिया भर में, और काफ़ी सारी कंपनीज जो इंडिया में है, इनके इनपुट कॉस्ट ऊपर गए हैं। तो अभी रिजल्ट सीजन शुरू हुआ है, तो आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी कंपनीज के मार्जिन पे प्रेशर है। तो वो एक नेगेटिव ट्रेंड फिलहाल चल रहा है। और कुछ कुछ कंपनीज के जो शेयर प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लास्ट few months of inflationary pressure on margins. So there will be a slowdown on profitability, और शायद एक थोड़ा सा ग्रोथ स्लोडाउन कुछ कुछ सेक्टर्स में दिख रहा है हमें। तो उसके वजह से इट विल बी अ वेरी volatile phase in the near term. But while I'm saying this, in the last 15 days to 30 days, lot of these commodity prices globally have corrected. हार्ड मेटल्स हो या सॉफ्ट कमोडिटीज हो या एनर्जी और ऑयल हो, हर सेगमेंट में 15% से 40% का करेक्शन हुआ है। तो जो रिजल्ट में तकलीफ आज दिख रही है बिकॉज ऑफ मार्जिन्स कमिंग डाउन, वो थोड़ा ईज अप हो सकता है अगले 3 से 6 महीने में। तो देर आर ऑपोजिट फोर्सेस, सम आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव। इन सम it will be a fairly volatile sort of environment at some point in time. चलिए, आपने हम ये तो समझ गए दैट इन द लॉन्गर टर्म मार्केट्स ऑब्वियसली विल ग्रो, एंड जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है काफी रेजिलिएंट सा है। एंड आई फील इस पे एटलीस्ट इंडस्ट्री में से किसी की और दो राय नहीं होगी। इनफैक्ट नॉट जस्ट विद इन द इंडस्ट्री, आई फील ग्लोबली नो वन इज हैविंग एनी स्प्लिट ओपिनियन ऑन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी। हाँ, कहीं ना कहीं क्वांटम में एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि कितने से बढ़ेगा या कितने समय में बढ़ेगा, बट आई फील everyone has a common buy-in that it is a really robust growth story that is happening in India. But उसके साथ ही साथ आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, जहाँ पर आपने बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया इन्वेस्टर के बिहेवियर पर इंस्टेड ऑफ द इन्वेस्टमेंट के बिहेवियर पर, right? It reminds me of one of the books by Carl Richards, right? The Behavior Gap, an Behavior all-time gap. classic in behavioral finance, and it says that आपका एक इन्वेस्टमेंट का रिटर्न एक्स होता है और एक इन्वेस्टर का रिटर्न होता है वाई होता है। टिपिकली जो इन्वेस्टर रिटर्न होता है वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न से कम होता है, और वो जो गैप है दैट इज द बिहेवियर गैप, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एन इन्वेस्टर्स बिहेवियर और सर्टेन बायसेस। तो जो आपने शुरुआत में बात की कि मार्केट ऐसे कई सारे वेरिएबल्स और डेटा पॉइंट्स हमारे तरफ फेंकते हैं, राइट? बट जरूरी नहीं कि हम हर एक पर रिएक्ट करें। एंड बाय दिस यू ब्रॉट टू फोर जो हम थियोरेटिकली, जिसे हम नाम देते हैं एक एक्शन बायस कहा जाता है इसे। एक्शन बायस इज नथिंग बट एन इच टू एक्ट अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। अगर अगर आज कोई पेपर में पढ़ लेता है कि आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है, तो एक अलग सी एक चाह बढ़ जाती है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं। अगर आज आप देखोगे कि टेलीकॉम कंपनीज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट
to participate in the 5G spectrum, लोगों को लगता है कि बेच दो telecom stock, let's just move out of it. And this is a continuous rut that leads them to nowhere in particular, right? Because they can continuously react without reaching anywhere. But the most important thing is action bias, although being a known bias, is perhaps the most difficult bias to overcome for a normal retail investor. जैसे कि अगर मैं एक आम इन्वेस्टर की बात करूं, उसे ये जरूर he or she feels that he is not doing enough or not doing justice to his portfolio if he or she is not actively reacting to the news flow, right? So आपके इस टॉपिक पे क्या विचार है, like how can someone even try overcoming the action bias? What are the key tenets or key behavioral traits that one must adopt to head towards mitigating this action bias? ओके सो मेरा ये मानना है कि अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए कोशिश या जो सीख है वो हमें मिल सकती है ये देख के कि अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस क्या है. इफ वी नो व्हाट डज नॉट वर्क, ऑटोमेटिकली वी विल स्टार्ट डूइंग लेस एंड लेस ऑफ इट, and hopefully that will help us become a better investor. So there's a very interesting example about action bias in soccer के फील्ड में. जब लोगों ने रिसर्च किया था कि अगर पेनल्टी किक्स का जब टाइम आता है तो देर आर ओनली टू प्लेयर्स हु मैटर, द गोलकीपर एंड द प्लेयर हु इज किकिंग. एंड so there was a research done where someone analyzed thousands of kicks, and नॉर्मली जो गोलकीपर होता है ही हैज़ टू मेक एन अजम्पशन, ही हैज़ टू इन अ वे प्रेडिक्ट कि सामने वाला जो प्लेयर है वो राइट साइड पे गोल करने की कोशिश करेगा, लेफ्ट पे करेगा या स्ट्रेट करेगा, and then accordingly he will decide to jump. So many times he jumps to the right, bases some reflex, and the ball goes to the left and the goal is scored. Sometimes he gets lucky, he jumps to the right and the kick is also on the right, and so on and so forth. That data said that the most successful decision of goalkeepers were the one who did not jump on any side but who remained at the center. So he gave up goals which went to the right and left, but there were many kicks which came straight and he was able to save them. So the save ratio was higher when he did not act much. So this is more coming from the field of sports or soccer. But if you learn from the most successful investors in the world, what they say is activity is the enemy of returns. The more we act, we think every action will create extra return, but many times on the contrary it is the other way around. We should act, but we should act decisively only when data points change, or only when the information we have is relevant to the result we want. Having information is not a reason to act, because in today's world, the quantum of information has gone up 1,000 times. So we will keep getting more information every day, and if we keep acting every day, we will tire ourselves out. We will tire our money out, because the more we act, we tire. Uh, and if you want to retire you don't need to act. You have to just survive. You have to last. And the more we act, survival gets questioned, or survival gets difficult, because you are giving up your energy in so many actions. And every time you act and portfolio returns are lower, your capital is getting eaten away. So when you look at history of successful investors who have created billions of dollars of wealth, though they started also from a large base, was less activity or only thoughtful activity. And so it's important to know what are you trying to act on. And another point, Howard Marks ne ye bola hai ki by the time you get the information about as you mentioned, telecom not doing well or infra likely to do well, the market also has got it at the same time. So it is already reflecting in the price. So unless you know something that the market does not know because of your research or insight, and hence you are acting, it's fine. बट जो न्यूज़ फ्लो टीवी पे दिखता है या न्यूज़पेपर के हेडलाइन में आता है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे साथ करोड़ों लोग उसी टाइम पे वो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो मार्केट में तो ऑलरेडी भाव के अंदर आ चुका है. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनेक्डोट आई हैड हर्ड वेयर हार्वर्ड मार्क्स, जो बहुत सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर है यूएस का, उसको उसके बेटे ने जाके बोला कि आई थिंक this company has announced good results and we should buy the stock of this company. And he asked his son that, is this information given only to you? Are you only privy to this information, or the whole world knows? So the second order effect is the whole world knows it. The price is already discounted. So you are not going to get any advantage. So in summary, don't react to information.
react to turning points, react to data significantly improving or deteriorating, but not yet captured in the price. And only then is action valuable. Otherwise, doing nothing generally is the best form of holding on to your time horizon and returns. Absolutely. I feel we need to make peace with the fact that inaction is also an action in itself. Inaction does not always reflect indecisiveness, right? ये जो fact है इसके साथ we need to make peace with it and be content with the fact that not every news flow needs to be reacted upon. And I feel pretty much like in investments, also in life and career, not every curveball thrown at you needs to be reacted upon. Sometimes you just gotta sit, take it, and view it. There is a saying हिंदी में जो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो उसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा. So do not jump to conclusions or preempt Also, analysis. या Yeah. ऑल्सो लेट मी ऐड दैट अगर पहला जो डिसीजन लिया है इन्वेस्ट करने का या इन्वेस्ट नहीं करने का किसी भी फंड में या थीम में या एसेट क्लास में, अगर वो थॉटफुली लिया हो, तो फिर उसको अगर हर नई इंफॉर्मेशन के बेस पे अगर हम एक्ट करते हैं, उसका मतलब है कि पहला डिसीजन गलत था या उसका रिगर ऑफ एनालिसिस गलत था, बिकॉज यू नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू योर कन्विक्शन ऑफ द लास्ट डिसीजन. So what I'm saying is we should not be rigid. We should be flexible. If data changes materially, we should react accordingly. But if your homework is thorough, most likely for most new information, we should not react impulsively. Absolutely, absolutely. In fact, thinking about it, I realize this brings me to my next set of questions. Another a very interesting thing that we have noticed amongst investors. So I was listening to one of the podcasts where a very celebrated entrepreneur of India made a statement, a really quirky, funny sort of a statement. He said India operates in extremes, right? अगर आप कभी भी कोई भी ऐप का प्ले स्टोर पेज खोल के देखोगे तो या तो 1 स्टार रहेगा या तो 5 स्टार रहेगा. No one feels it is worth a 2 star or a 4 star or a 3 star. It's going to be either the best app they've ever seen in their lives or it is perhaps the worst app they've ever experienced, right? So we move in extremes, especially as a society, as Indians, right? And this is more so reflective among Indian investors. So a very antithesis to this entire action bias that we spoke about is the tendency to not act, or the fence sitting bias, as I can call it, is when people, जैसे कि आपने कहा कि अगर आप subsequent decisions ले रहे हो जो कि आपके पहले decision से अलग है, that means that your पहला decision was not right. And there is a large set of investors, or rather I'd call them prospective investors, who want to make their first decision the best decision they've ever made in their life, and they continuously observe, analyze, to an extent that they reach a point of getting paralyzed by analysis, right? The paralysis of analysis sort of a syndrome starts developing around them. वो समझ नहीं पाते. They are constantly looking for that one moment that will make them rich overnight, and in the process they lose out on a large amount of time. So what are your views, or rather your message, to such prospective investors who have been tracking markets, funds, themes, assets for a very long time, but they're not really taking the first step because they just don't want to go wrong. They just want to be very sure about what they're doing. So, Nirav, I don't know if such investors really exist, because if they are tracking markets for so long, then they are and not acting, then they are wasting their precious time. They should be instead watching a movie or a sport or reading a book or going on a track. Because if and see, it's not necessary that everyone has to invest. It is good if they invest. Good for us as investors, because market helps you in retaining your purchasing power, beating inflation, and helping you to lead better financial futures. So this is something which everyone, I'm sure, would know is good for us. But let me convey that I said that the most important variable in our wealth creation is time, because in the formula of compounding, the variable of time is raised to the power of t. Yeah. Whereas other variable like return or the principal that we invest has a plus sign or a multiplication sign, but the sign of exponentiality has the highest impact on the final amount. So everyone should recognize that every day of delay can cost a month of extra saving.
and every month of delay can save quarters of income, and years of delay of to start can be decades of income or loss of income in the future. And just to give this a certain relevance to what is the power of compounding and the value of time, and hence the value of acting ahead and timely, is we always talk about Warren Buffett, who is the most celebrated and iconic investor of the world. And he's, I think, 90 years of age now. He has been investing for a period of 70 years. Uh, and he always said that I started investing at the age of 11, but I repent that I started 11 years late. So his thesis was कि मैंने 11 साल का कंपाउंडिंग मेरा छूट गया. अब ये 11 साल की कंपाउंडिंग का मतलब क्या? I'll just explain. In his let's say total wealth of let's say $85 billion, $81 billion um, have has come after the age of 65. Basically 65 से 90 का जो phase है उसमें जो उसका compounding back end, what I'm trying to say is compounding is back ended, which Yeah. means the sooner we start, the more time our money will have to compound. When we joined our first company, I started working in a mutual fund in 99. I was very fortunate that I got a job in a mutual fund. The first thing we were taught is every day the money is remaining idle in your bank account. The bank is earning money on your hard-earned savings. You are not earning, because बैंक तुमको 3 4 5% दे देगा सेविंग्स अकाउंट पे, जबकि उस बैंक के खुद के धंधे का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15% है. तो उससे अच्छा Right. बैंक का शेयर खरीद लो और उसके साथ जुटे रहो, क्यों आपको 15% का आरओई मिलता है, तो उसको 4% पे डेट क्यों देना है? सो द कॉस्ट ऑफ डिले इज वेरी वेरी हाई, and we should recognize that. And there are times you are confused, you don't know what to do. As you rightly said, so many data points are moving. We all want to be careful with our money. हमें मेहनत का पैसा है तो ऐसे ही नहीं लगाना होता है. बट या तो एक अच्छा एडवाइजर ढूंढ लो जो आपको तुरंत गाइड कर सके, या फिर स्टार्ट विथ बेसिक प्रोडक्ट्स लाइक जस्ट स्टार्ट विद अ सिंपल एसेट एलोकेशन फंड जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन है. एंड इनफैक्ट म्यूचुअल फंड ने ये जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का, वो आपको जब इक्विटी महंगा होता है तो इक्विटी का रिस्क कम कर देती है. इक्विटी सस्ता हो जाता है तो इक्विटी, सो जो टाइमिंग का एस्पेक्ट है वो भी उस, सो देर आर इनफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल that an investor can start with the one which is most suited to his risk profile. So I would only say that be impatient before investing and be patient after investing. Most often we do the opposite. We are impatient. We are very patient before we invest, which works for banks because they get, in a way, good amount of float. But that's your hard-earned money. So I think if we realize that every day of delay today is weeks and worth of salary in the future, that is a simple equation, and I see no reason. I don't keep money in my savings account more than required beyond 24 hours. The day salary hits the account, it has to automatically get invested in A, B, or C fund, whichever I've decided as per my investment plan. Absolutely, I feel the most important takeaway, guys. Obviously, every word uttered is a piece of gem in itself. But a very simple way to assimilate and encapsulate everything that you've heard is this entire phrase around be impatient before investing and be patient after investing. I feel it encapsulates this entire response superbly. In fact, you slightly brushed upon a very important subject, and I will bring that once again to fore. You spoke slightly about asset allocation, right? और ये काफी हमारे ऑडियंस भी जो इन्वेस्टर्स है वो सुनते रहते हैं कि एसेट एलोकेशन इज किंग, एलोकेशन करना चाहिए उसके बाद ही. But there are many such DIY investors who do not really have access or may choose to not have access to advisors, distributors, etc. And they are yet thinking how should they approach asset allocation in the first place, right? They're not really getting the concept. They're trying to find some thumb rules कि 100 माइनस एज कर दो, फिर वो मॉडिफाई हो गया, हम 120 माइनस एज कर दो. बट दिस कीप्स चेंजिंग, एंड none of these thumb rules really seem to be the at least close to the ideal way to begin your asset allocation journey. So for a very fresh investor who has no investing experience whatsoever but wants to begin his journey,
and knows that he has to start with asset allocation. What, according to you, is the best way to do that? Okay, so there is no perfect answer, Nirav, because it is a function of each investor's Yeah. behavior and temperament. And जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला जो सत्य है मार्केट का वो है ये है कि वो फ्लक्चुएट करता है. दूसरा, एज एन इन्वेस्टर, एंड इनफैक्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इंडिया ग्रोथ स्टोरी. इनफैक्ट आई कम फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट थॉट कि what if India doesn't grow in 20 years? Would you risk your money? Or what if India grows still you don't make money? Like Japan didn't make money over 40 years. China grew faster than India. China had Yeah. growth higher than any country in the world, yet 20-year returns are zero. So there are Yeah. many nuances like that. I don't intend to confuse the listeners, but what I'm trying to say is to a first time investor, and I believe that 95% of the listeners on this video would be earning income every month and Yeah. hence saving money every month. Yeah. So asset allocation दो तरीके से होता है. एक है diversification across asset classes of different risk and different directions. So जब equity ऊपर जाता है तो debt stable रहता है. काफ़ी टाइम जब डेट के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इक्विटी का कम हो जाता है. या काफ़ी समय 3-4 साल डेट का रिटर्न नेगेटिव होता है तब गोल्ड अच्छा रिटर्न देता है. तो Yeah. अगर हमारे पोर्टफोलियो में वो डाइवर्सिफिकेशन हो तो हमारे पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव रिटर्न्स होता है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है. सो Yeah. डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस वॉलेटिलिटी, बट एट Yeah. द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन ensures the worst performing asset class is also in the portfolio. And diversification also ensures that the best performing asset class is also in the portfolio. So it averages out. Uh, Left to ourselves, what we end up doing is choose the best performing asset class as of today, but which many times in the future is the worst performing asset class, and we are overexposed to that. So Yeah. दोनों के so ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर हमारा पूरा पैसा उस एसेट क्लास में है जहां नुकसान, जिसका पिछले एक साल का रिटर्न बहुत अच्छा था, जैसे क्रिप्टो करेंसी था, या all these cryptos were doing very well. So I know so many youngsters who have they started their investing journey with that, and then it's down 50%. Now when you lose 50 and you have to earn 100 to just get your capital back, um, Yeah. right? So not losing money is very important. So the whole concept of asset allocation is to lose less when that asset class does not do well. And so one way of asset allocation is diversifying across asset classes. Second way of asset allocation is diversifying across time, which is what Hmm. SIP is. SIP, Yeah. which is systematic investment plan, is a monthly investment concept. तो आप जब हर महीना इन्वेस्ट करते हो तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो ओवर 12 months. इफ यू आर डूइंग अ Yeah. 10-year SIP, आप 120 महीनों में डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप 10 साल में डाइवर्सिफाई कर रहे हो. 10 साल में जनरली हर मार्केट में 3 साइकिल्स आती है. एक होती है तेजी की साइकिल, एक है मंदी की साइकिल, और एक है बोरिंग साइकिल, जब मार्केट कहीं नहीं जाएगा. तो आपका पैसा हर साइकिल में जब लगेगा तो आपको मंदी में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे. आपको जब मार्केट साइडवेज जा रहा है तब भी आप इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदोगे, और जब तेजी होगी तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम मिलेंगे, लेकिन जो मंदी में खरीदे हुए हैं उनकी वैल्यूज बढ़ेगी. तो Yeah. ये दोनों तरीके से डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन होता है. तो जो नया इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से जिसको लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है और एसआईपी से शुरू करना है, तो उसे इक्विटी फंड के थ्रू शुरू करना चाहिए. और अगर स्टॉक मार्केट के फ्लक्चुएशन से थोड़ा डर लगता है तो आप इक्विटी एंड बॉन्ड फंड से शुरू कीजिए, जिसमें 30% हमेशा डेट में होता है. तो मार्केट अगर 10% गिरेगा तो ये सिर्फ 7% गिरेगा. So there are choices again. So you can pick and choose depending on what is your profile of risk. And Hmm. in a very simple way, when we look at a cricket team, we don't have 11 great batsmen, or we don't have 11 best bowlers. We have a Yeah. mix of all. We have a good batsmen. We have a few who defend well, few who attack well. We have spinners. We have fast bowlers, and then there are one or two who are all rounders. बिकॉज हमें ये नहीं पता है अपने अगले 30 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी में क्या क्या एनवायरनमेंट आएंगे. Hmm. तेजी का माहौल होगा तो इक्विटी हमें पैसा बना के देगा, बट मंदी का माहौल होगा तो डेट हमें प्रोटेक्ट करके देगा. जब जब इक्विटी गिरता है डेट आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है. तो ये एडवांटेज है एसेट एलोकेशन का. तो जैसे मैंने बताया कि शुरू करना है तो सबसे पहले आप शुरू कीजिए इक्विटी एंड बॉन्ड फंड की एसआईपी के जरिए, या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की एसआईपी के साथ शुरू कीजिए. सी हाउ इट वर्क्स ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years, एंड देन ग्रेजुअली माइग्रेट और ग्रेजुएट टू प्रोडक्ट्स व्हिच यू अंडरस्टैंड बेटर.
Absolutely. I feel a very important point was made here. But before that, guys, जिनको लगा होगा कि बहुत ही nuanced है, अभी भी हम पकड़ नहीं पा रहे. The easiest way to get to an ideal asset allocation is to seek help from a qualified advisor or a portfolio manager. अब जब वो नहीं होता, I feel Kalpin gave you a fantastic starting point. You can start off, अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और निवेश करना चाहते हो, तो आप इक्विटी फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं. अगर आपकी अवधि थोड़ी कम है, मान लीजिए इट कुड बी रियली शॉर्ट, बट जस्ट टू पुट अ नंबर, परहैप्स 5 से 7 साल के करीब है, तो आप इक्विटी एंड बॉन्ड फंड टाइप हाइब्रिड जो फंड्स है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स है, यहाँ से शुरुआत कर सकता है, पर अगेन इन दी एसआईपी फॉर्म ओनली. So I feel the most important takeaway for you is शुरुआत करना. I feel that is extremely important. You got to start. And if you don't know where to start from, start with a hybrid fund. And as you move and as you experience, you will figure the actual asset allocation as per your needs. But you got to start somewhere to learn it. Right? So, Kalpin, अब तक के Nirav, discussion से हमें ये तो, sorry, yeah, can please, I please, interrupt? please. I'll give you another framework by, again, the man who taught Warren Buffett all his investment learnings, Hmm. on particularly on the topic of asset allocation. In his book, he has written a chapter also. और उसने बोला है कि ideal asset allocation 50-50 होना चाहिए जब Hmm. हमें clarity ना हो. And generally market में ना आधा most of the times clarity नहीं होती है. हर दिन बाजार में कुछ अच्छे न्यूज़ होते हैं और कुछ बुरे न्यूज़ होते हैं. So we will always be confused. So 50-50 is a good allocation to start. मार्केट में Hmm. बहुत तेजी हो जाए जब एवरीवन सेज इक्विटी मार्केट इज बूमिंग, आईपीओज आर कमिंग, ऑल द सिग्नल्स आर लाइक अ बबल, दैट टाइम मूव इट टू 25-75. एंड जब Hmm. बहुत मंदी हो जाए तब यू मूव इट टू 75 equity, 25 debt. So he said if you do this at large over long cycles, you probably will be in the top 5% investors of the world in terms I of feel your. probably that's actually a very smart way to do it. लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ही simple सा है, but guys, the best things are not meant to be complex. It could be as straightforward and as yielding as as Kalpen mentioned. So Kalpen, अब तक तो हम ये समझ गए कि काफी सही तरीके आप जानते हो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और and you are also leading one of the most successful asset managers in the country, and you have delivered performance and great wealth to millions of investors already, right? But क्या कभी आपके साथ, कल्पेन पारेख जी के साथ, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गलती की हो, इन्वेस्टिंग मिस्टेक, आज नहीं, चाहे बहुत सालों पहले, जिस जो आपको कुछ ऐसी सीख दे गई जो आप लाइफ टाइम आपके साथ रह गई हो? वुड यू लाइक टू शेयर, और हैव यू मेड एनी सच मिस्टेक दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद दैट ऑडियंस? Sure. See, I think my first 11 years were mostly mistakes only, and 2008 या 9 में वो clarity मिला कि क्या नहीं करना चाहिए. So the biggest learning was what not to do, and Yeah. what were the errors I was making time and again every day. The first error was investing for the future, but looking at data behind. So the biggest mistake almost 99.9 investors make even today, and it's not just retail investors, it is sometimes we as money managers also make, is we like a stock or a fund which has done very well in the last 1 year. So हम सबसे पहले जाके वैल्यू रिसर्च या मनी कंट्रोल या फिस्टम या कोई भी वेबसाइट पे जाके हम देखेंगे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स. So the best mistake to make is to choose the search the best performing funds. I would say it's the worst mistake to make, because what happens when we see something ranked on size of returns in short history, because I said that markets fluctuate, because I said that asset classes have cycles का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर है वो कल नीचे जाएगा और जो नीचे है वो शायद कल ऊपर आएगा. So when you have something like this, uh, when we chase past returns, when we invest basis past returns, we end up always buying something at the peak of its cycle. And in the next 1 or 2 years, the returns are poor. So I think that was one of the most frequent mistake I used to make, which is constantly looking at past returns. The second mistake was panicking when markets get fearful or prices fall. You feel very uncomfortable. Fear is a very strong emotion. When you see 15-20% fall in the NAV, unless you don't know the rules of the game again, which say that generally in the long term NAVs recover. In the long Yeah. term, good companies ka NAVs recover, good funds ka NAVs recover. And Yeah.
Bad companies will never recover. So it's very important to be very discerning कि आप जिस एसेट क्लास को या फंड को या स्टॉक को देख रहे हो, वो अगर परमानेंटली खराब स्टॉक है तो सस्ते में भी नहीं खरीदना चाहिए. So on and so forth. So, not choosing past returns only as a variable to invest is my first mistake that I have corrected. Second thing is, I've attempted to be more contrarian, that जब बाजार बहुत मंदी में है तो थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी का बढ़ा दो, एंड वाइस वर्सा जब बहुत तेजी में है, लास्ट ईयर एवरीथिंग वाज लुकिंग रोजी एंड बूमिंग, आई थॉट दैट मनी मेकिंग कैन नॉट बी सो इजी. जहाँ पे बिजनेसमैन को, कंपनीज को, प्रोमोटर्स को सालों साल लगते हैं 15% का प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करने में, और यहाँ पे इन्वेस्टर हर महीने में 15% बना रहा है स्टॉक मार्केट में बाय जस्ट बाइंग पेपर वेल. So at such times you reduce your asset allocation. You don't get carried away. You don't get drunk just because market is getting drunk. So these are few things that you should do. And I think most important is before you start, ask the right questions. The biggest error we make is we keep asking wrong questions. Which stock looks good? Which sector looks good? Rather than that, learn to ask what are the rules that can define good stocks, or what are the rules that can define good stock sectors or good mutual funds. What are the principles? If you learn the principles, then you don't need to even talk to any one of us. You can apply that day in and day out on your portfolio. So I think, and this is too short a time to really talk in detail, but I would always say that it's important you should know what are the boundary conditions of the asset class in which you're investing. अगर आप equity में invest करते हो, you should know that what is the worst case return equity as an asset class can give annually. Data shows that once every 7 years, stock markets fall by 50%. Now, if you don't know this in dimension, then you are investing in blind, because when that event happens, you will feel cheated. अरे ये तो बोला नहीं था किसी ने. बट डेटा अगर आप देखोगे तो ये दिखेगा कि 10 साल में एक मंदी आती है बड़ी, हर 5 साल में 20-25% गिरता है. तो ये सब डेटा पॉइंट्स को जान के फिर आप जब अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, देन when bad times come, you will not react. You will know that okay, this too shall pass, and hence I will live through it. एक किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें उसने लिखा है कि पूरी किताब का जो ये समरी है वो 4 शब्दों का है. This too shall pass. In good times, remember these 4 words. In bad times, remember these 4 words, and accordingly make investment decisions. So I think these are few learnings I have had. Absolutely. I feel that's fantastic. Now that we have established that it is okay to make mistakes, but all the more important to course correct. So एक question हर बार आता है कि what is the right way to then rebalance? Because there's a very thin, blurry line between course correction and unnecessary action, if I could call it so. सो एक सही फ्रीक्वेंसी क्या किसे माना जा सकता है पोर्टफोलियो को रिव्यू करने के लिए या रीबैलेंस करने के ये रिव्यू आप एक्सट्रीम्स पे रियल टाइम कीजिए. जब कोविड जैसी सिचुएशन आती है, जब 20 से 40% का कोई भी एसेट क्लास में करेक्शन होता है, तो उसे रियल टाइम रिव्यू करने की ज़रूरत है. And otherwise, do it once in a year or two. It's like, let's say you're going from Mumbai to New York. The flight is a 16-hour journey. The pilot is more active in terms of checking his checklist and everything while takeoff at the beginning, and largely towards landing. And otherwise, in between 15 hours, mostly he will not do much as long as all the dashboards are not blinking red. And suddenly, if something starts blinking red, he will react real time. So likewise in investing, react on extremes, react when asset allocation shifts by 10% in a big way. आपका 50-50 का asset allocation है वो 60-40 हो गया या 70-30 हो गया. So that is when you need to rebalance. So rebalancing should not be date based. It should be quantum based. It should be big events based. And many times if you are doing asset allocation through a hybrid fund, वो अपने आप ऑटो रीबैलेंस हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. We have like large chunk of my investment is in our dynamic asset allocation fund. In around 1 month back, it shifted 10% to equity from debt. So it was 14 equity and 16 debt, but markets were falling, so it moved 10%. Now, I didn't have to do anything; it did on its own. So I would say search for the right product, learn the product design. What does it do? How does it work? What are its pros and cons? Because there is no perfect product. Every product works in a cycle, and there are some times when nothing works. So we need to accept that. Let's not look for perfection. Look for being a perfect investor rather than choosing a perfect product.
So I think that's how you can figure it out. Absolutely. So Kalpen, as we move towards the end of this conversation, before we pick questions from the audience, there are quite some questions, but we'll pick a couple of them. Before that, one last question. Kalpen, you spoke about asking the right question. So, as an investor, who is just going to begin his investing journey, what are the top two or three questions that he must have absolute clarity on, or he must try to seek absolute clarity upon before investing? Okay. So the first thing to check is, wherever I'm planning to invest, what can be its worst case return in a certain time horizon when things don't work, because things don't work once every few years, or markets do fluctuate once every few years, and when they fluctuate, what can go wrong, what can be the fall in your returns or your NAV, be aware of that. So that's the first thing one should know. The second, so that means know the risk of the product. Second is, know the, know whether the time horizon of your money is aligned to the time horizon of that fund's ability to give you reasonable return. So as an example, equity is an asset class where long term average returns, if you invest in mandi, can go towards 12 to 15%. If you invest in very high teji ka times, then your returns can come down to 8 to 10%. So basically, मंदी में जब पैसा डालते हो तो अच्छा रिटर्न बनता है, बहुत तेजी में पैसा डालते हो तो थोड़ा कम रिटर्न बनता है, बट फिर भी बाकी सब एसेट क्लासेस से ज्यादा रिटर्न बनता है. सो यू नीड टू नो व्हाट कैन बी द रिटर्न इफ यू इन्वेस्ट इन अ बेयर मार्केट वर्सेस इन अ बुल मार्केट. सो यू नो द रेंजेस. टू गिव एन एग्जांपल, 2008 was a year of huge peak and bottom. Jan 2008, stock markets were at its huge all-time high because of the last 5 years of boom. So whoever invested on that day and has stayed invested till today, so 14 years have gone, the returns were around 9% on Nifty, 8 or 9%. Now it's not too bad because FD में 4 या 5% पे पैसा पड़ा होता है. तो 8 या 9% tax free is not a bad return for a country where inflation is 6. And in the same year, in September, when markets had crashed by 40-50%, if you had invested just 9 months later, the return since then till today is 16% CAGR. So 8 versus 16. So broadly, your boundary condition is 8 and 16 then. Yeah. So you should not always expect 16. You should not assume कि आज 8 मिल रहा है तो अब 8 ही मिलेगा. Provided your time horizon is minimum 7 years and above, because equity का एक cycle 7-8 साल का होता है. Having said that, जिसने जनवरी 2008 में इन्वेस्ट किया था, उसका पहले एक साल का रिटर्न 50% नेगेटिव था. Yeah. So so knowing these rules of the game, what can go wrong is very important. But having said that, within the next 1 year, this minus 50 became zero again because markets went up by 100%. So every sharp fall, generally market gives a very sharp rise because news flow changes fast and markets react also very fast. So if you need to know what are the boundary conditions, you need to know in what type of environment does this asset class work versus others. Likewise, when you are doing fixed income investing, because you need to understand debt also. When interest rates are low, future returns are low. When interest rates are rising, future returns are also rising because you're locking your money at better rates of return. So these are few things that you should be aware of. Yep, yep. I feel very well put. I'm just hoping that everyone was taking notes. If not, guys, you can rewatch this video. It'll be there on the same link. So, in Kalpin, really quickly, we'll pick a couple of questions because there's just so many. I'll try to accommodate a couple of them. The most interesting question that I saw, and I call it interesting because someone seems to have done his or her homework. It says that as per a recent Mint coverage, you do not hold any real estate investments. What is your opinion on real estate as an investment asset class? See, any asset class makes sense to me if it is cheap and if I have the ability to manage it. My observation with real estate, I recently bought my home last year. Like I said, जब स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी हुई और न्यूज़पेपर में आने लगा कि इंडिया इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आई सेड पीएलआई अनाउंस हुआ, ये है वो है, बहुत तेजी थी. आई सेड थोड़ा पैसा निकाल लो, खुद का घर नहीं है, रेंटेड हाउस में आई हैव बीन लिविंग फॉर last 20 years, let me make that first decision and own a house. So last year I used, because real estate was still in a down cycle, stock market was in an up cycle, that was my asset allocation rebalancing.
उसके अलावा I do have a very small home that let's say I had purchased just when I got married in 2001 or 2. uh, आज मुझे वो फ्लैट बेचना है, मुझे 10 बार ब्रोकर के साथ घूमना पड़ेगा. uh, it is taking time. I'm not getting the best price. So to me, I find real estate, personally, it is my choice, okay, my bias. Transaction costs are high. 20 साल ये प्रॉपर्टी जो मैंने रखी है, उसकी रेंटल यील्ड 1.5 या 2% है. मुंबई में रेंटल यील्ड्स आर वेरी पुअर. मैं कुछ नहीं करके मेरे डेट फंड में पैसा रखता हूँ, तो मुझे 6 से 8% का रिटर्न मिलता है. रियल एस्टेट रेंटल यील्ड इज वेरी लो. The growth rate of real estate in India, again, particularly in Mumbai, because I don't have the bandwidth to go anywhere else, Mumbai has generally been a very expensive real estate market. Uh, हमारे टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए to have real estate rates which are like 40-50,000 per square feet is a bubble. So I feel that is a bubble, and hence I don't want to put my hard-earned money in anything which is a bubble, even if in the last 10 years it would have given good returns. So I am a firm believer bubble में पैसा नहीं डालना चाहिए. दूसरा जो मैंने बताया कि स्टैम्प ड्यूटी, brokerage cost, transaction cost, tax inefficiency, all of those are big issues. Some people have definitely made a lot of money in real estate when they bought it at a cycle low. Pieces of land which have gone up 100 times, 500 times in some pocket of the country. But that is also a matter of luck. How there are so many stories where real estate has not made money, but they never come out in newspapers. So that is my way. I don't like complexity. दूसरा, आज मेरे पास अगर 100 रुपए का स्टॉक का पोर्टफोलियो है या इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो, आई वांट टू टेक आउट 5 rupees, आई वांट टू टेक आउट 1 rupee. I can do that. In real estate, I cannot. I have to then, I can't strip it in small lots. I personally, not because I had a mutual fund, but I genuinely, even if I was not in this industry, I would have said that there is no better product than a mutual fund for people like you and me who do not have time. Once, all our time is focused on earning money, but when we have to give it to something where this is highly regulated industry, highly transparent, highly tax efficient, you get to see your portfolios every month. There is very strong regulation to ensure that investor interest is protected. Cost structures have come down. आज इंडिया में आप बेस्ट फंड मैनेजर्स को at very reasonable price you can take advantage of their services. Globally, you have to pay 3, 4, 5% to choose the best fund managers. So I think that's why my preference is to stick away from complexity and stick to what I understand the most. Now, if you're talking to a real estate expert, he would have given you a very different perspective. So I'm only saying learn the asset class and then take decision. My judgment, and I've done some data crunching. आप वो एक व्हाट्सएप मैसेज भी काफी समय हर साल वो घूमते रहता है कि आपने मुंबई का जो सबसे महंगा लोकेलिटी है उसका आज का प्राइस देख लो, और 40 साल पहले अगर आपने वो खरीदा था तो भी सीएजीआर रिटर्न जो है वो 9 या 10% का है. आपको सिंपल निफ्टी में 11-12% रिटर्न बन जाता है विद लिक्विडिटी टैक्स. रियल एस्टेट डजंट हैव लिक्विडिटी एंड दैट इज माय बिगेस्ट वरी. Yeah, absolutely. Completely makes sense. Completely. The next question also is around an asset class, yet another popular asset class. What are your views on gold as an asset? ओके, सो गोल्ड में क्या होता है कि गोल्ड के पास कैश फ्लो नहीं होता है. गोल्ड डज नॉट बिल्ड अ बिजनेस एंड ग्रो दैट बिजनेस. व्हाई डू स्टॉक्स एंड इक्विटी फंड्स मेक perennial long term returns? Is because company raises capital, puts it in business earns a return on equity of 10, 15, 20%. That profit gets reinvested in business, that again grows at a certain rate. So these asset classes have cash flows and growth. On the other hand, gold does not have cash flow and growth, but gold has remained a store of value for many decades and centuries. I do have around 12 to 15% of my portfolio in gold. Many people say 5% asset allocation के नाम पे होना चाहिए, but 5% doesn't move the needle whichever way. So करना है तो meaningful होना चाहिए या zero होना चाहिए. Gold is my asset class ownership for sake of fear. So normally again in gold I invest only when stock markets are very high, which means the P multiple of Nifty goes 25 times and above. And so then my first choice is, then if I don't want to add too much equity, then I will look at debt. But in the last 4 years, 4 or 5 years back, stock markets were at 25p and bond yields were at 5% or 6%. Normally इंडिया में 8 या 9% होता है. तो जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे थे, स्टॉक मार्केट बहुत महंगा था, I needed a third asset class. So gold was the third asset class, which for 10 years had given no return.
So in such times, I will add to gold. And because I feel that if rates are so low, I rather take exposure to gold at such points in time. So because of that, gold is around 10 to 12% of my portfolio. As Absolutely. of today, Yeah. gold has underperformed. So it is okay to have some incremental investment in gold with a 5-year plus horizon. Absolutely. So, one last question, guys. I know there are many questions unanswered. Try reaching out to us at research@fisdom.com. I won't be able to accommodate all of it. But one last question, Kalpen, because you manage on both sides of the business. Like, you also offer actively managed funds and passively managed funds. There is one question on similar lines. It is, how do you decide whether you should invest in an actively managed mutual fund or a passive fund? ओके सी जनरली ग्लोबली डेटा ये बोलता है कि एक्टिव फंड्स में कॉस्ट ज़्यादा होते हैं तो और ह्यूमन इंटरवेंशन होता है तो उसके वजह से रिटर्न पैसिव से नीचे है एंड विच इज़ अ फैक्ट ग्लोबली लॉट ऑफ एक्टिव फंड्स हैव अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट यस यू शुड कंसिडर पैसिव फंड्स seriously you should study them. Second point, in India, unlike globally, the cost of mutual fund investments, even active funds, is not as prohibitive as it is globally. So the cost difference is not very wide, it is slightly lesser. So to that extent, there is merit for analyzing active funds and investing there. Having said that, once or twice every 5 years, passive funds beat active funds. So there are Mm, years when the top five stocks of the index do very well. Then the mm, active industry is not able to beat them. So it's mm, always good to have some exposure to passive. Personally, in my investing, around 80 rupees is in active and 20 rupees is in passive. And normally, in a year when my active funds have done very well, उसके अगले साल की जो मेरी सैलरी की इनकम होती है वो मैं पैसिव में इन्वेस्ट करता हूँ. सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज आई इन्वेस्ट इन अंडर परफॉर्मेंस. नॉर्मली यू विल सी द थीम ऑफ व्हाटएवर आई हैव सेड ओवर द लास्ट 50 मिनट्स कि जो इनहेरेंटली लॉन्ग टर्म में सब कुछ सिमिलर रिटर्न देने वाला है, आज अगर वो अंडर परफॉर्म हुआ है या थोड़ा सस्ता मिल रहा है, देन टुडे आई विल इन्वेस्ट देयर. 1 year from now, if passive funds have done very well and active is underperforming, most investors will do what has done very well. I will do the opposite. So I mm. invest in passive when they underperform, and I invest in active when they underperform. But at large, because I understand how my colleagues and my fund managers, invest. I believe in that ideology. I personally have more bias for active investing, but I do have still 20% in passive. Absolutely. I feel the entire debate between active and passive is not a subject of or, but and. Just treat it like another product and see how well does it fit in your portfolio and serve the objectives. So, Kalpin, I feel this has been a fantastic conversation. It has just been, a couple of minutes, not even a full hour, but I feel there's so much we touched upon and so much of valuable insights that you have shared with us. There's a lot for us to take back and think about and ponder upon, and finally make that move, take that decision and break that inertia, right? So I'm so glad that we had this conversation. I'm so thankful and grateful that you took the time and you were available to share these insights with us and the audience. Thanks a lot for that. Thanks, and all the best to all of you. And thanks for tuning in and spending your 1 hour on a Friday evening. All the best. Thanks to you, Nirav, and to Team Fisdom. Thank you, Kalpin. Great talking. See you. Bye. Good day. Thank you. Can I log out? Yeah. 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 Okay. Chalo. Take care. See you. Bye. Yeah.